Hello students. Today we will create one more interesting game in Scratch and we will see some more functions. So let's start. Here we first of all create the new backdrop. For that we will go to the new backdrop button and click on it, and here we will create. You just check it out and try to perform this practical at your home. So here we will take this rectangular box. When you click on that box, you will get these two options. You can see one is filled rectangle and another one is unfilled rectangle. So we will select the filled rectangle and create our path. So you just check it out. Anyway, you can make your own design also. If you made any mistake, you just click the delete button, okay, from the keyboard and do it again. So in this way we made one path ready. Now we change our sprite here. We will change it with some another sprite. So we will take and choose from the new sprite area. So for that, first of all we have to delete this sprite, okay. Instead of delete I press duplicate, so delete both the sprite. Yes, now from the new sprite area select the new sprite. Here we select a ball, okay. Anything you can choose of your choice. So we are selecting ball, this ball, soccer ball, okay. Yes, so now I got this soccer ball. Now according to the distance between the two lines, you can just make shape or size of your sprite. So we'll reduce little bit. And yes, how can we reduce? We just have to click on shrink button, okay. Yes, here you have shrink button and then click on the sprite, and now as much size you want, you just click that much time and just adjust your sprite to the proper position. Now we'll select one more path, one more sprite, that is I am selecting here ballerina, okay. You can do any, okay. So yes, now I'll select the shrink button again and just adjust its size, okay, according to the ball. So yeah, at the other side actually we just doing that this ballerina could catch the ball, okay. In this way we will finish our game. So actually when our ball reaches to the destination, the ballerina will say you won. So for that we'll create the game. Today we'll create the game with the help of keyboard, okay, not by the mouse or not randomly the sprite will move. Here we will move the sprite by the keyboard. जैसे कि आप games में कैसे ऊपर नीचे आगे पीछे buttons use करते हो, okay, all the arrow keys of your keyboard. So here we use that. So let's do coding for our ball sprite. Okay, so first of all let's create one event. When flag is clicked, what we have to do now, see students, every time when we click on the flag, our ball should go to this position, okay, that is the starting position. So for that we will first of all you can see the very up right corner, you can see some coordinates of x and y, okay, that is the ball coordinate. जहाँ पे अभी हमारा बॉल पड़ा है उसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे होंगे, तो वही कोऑर्डिनेट हम लोग x और y में फिल कर देंगे. सो गो टू x, दैट इज़ द कोडिंग जो हम सिलेक्ट करेंगे. मतलब जब जब हम फ्लैग क्लिक करेंगे तब तब हमारा बॉल ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाना चाहिए, इसलिए हमने ये लिया है, ओके. Go to x and then the x and y coordinate, okay, that is the ball sprite coordinate. Now
वी विल डू कोडिंग फॉर द कीबोर्ड कीज़. जो हमारी कीबोर्ड की लेफ़्ट राइट अप एंड बॉटम एरोज़ है उसके लिए हम लोग कोडिंग करेंगे ताकि हम उसकी मदद से अपने स्प्राइट को मूवमेंट दे सकें. सो फॉर दैट लेट्स क्रिएट वन मोर इवेंट. यस, when flag is clicked, no, here we choose the another one, that is when space key pressed. Okay, so instead of space key we select first of all up arrow. Okay, when up arrow is clicked, जब हम अप एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है, तब क्या होना चाहिए, तब हमारा स्प्राइट अप डायरेक्शन में जाना चाहिए. ठीक है, सो चूज द पॉइंट इन डायरेक्शन ऑप्शन एंड हियर जस्ट सेलेक्ट 0 degree अप. ओके, एंड give your sprite movement to 10 steps. Means when I click on up arrow, then my sprite will move 10 steps up. Okay, same way we are duplicate this whole block 4 times because we have to do the same coding for 4 different buttons. Okay, 4 different arrows, so we are duplicating it. Okay, and just change the coding. In the second box you just change it to bottom and select the bottom 180 degree bottom, then select the left side and right side. Okay, so now here we have completed, and we will once check whether all our code is working properly or not. So click on sprite, click on flag, and then just try to press the keyboard button up, down, right, left, and yes, so our sprite will started moving. Now what I want is, I want to, so yes, when we click on flag, what we want that our soccer ball when touch to this maze, okay, it will move back. So for that हम उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि जब बॉल टच करे तब ऐसा होना चाहिए. तो कंडीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक दिया हुआ है. कंट्रोल में आपके पास एक इफ़ कंडीशन है. विच कंडीशन? इफ़ कंडीशन. सो टेक दिस ब्लॉक, इफ़ अगर ये होगा तो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग कोडिंग करेंगे. तो इफ़ व्हेन माय बॉल टचेस टू ब्लैक कलर. ओके, सो फॉर दैट वी हैव द सेंसिंग ब्लॉक. ओके, सेंसिंग ब्लॉक में आप देखोगे कि व्हेन टचिंग वाला एक है यहाँ पे, ठीक है. तो टेक दिस ब्लॉक एंड पुट इट इनसाइड द इफ़ कंडीशन. इफ़ टचिंग, अब किसको टच करेगा मेरा, नहीं सॉरी, हमें कलर लेना है, ठीक है, टचिंग कलर वाला लेंगे. ओके, इफ़ टचिंग, नाउ विच कलर, आई हैव अ ब्लैक कलर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल click here first. Okay, then this hand type, my mouse pointer has changed to this hand. Okay, and this hand you have to take and click on this black color, so you'll get black color here. Okay, now if touching this black color, then what I want that my mouse that my ball has moved back to 10 steps, so it will move minus 10 steps. Okay, so here I will code minus 10 steps. Okay, now these things I want, ये मुझे चाहिए कि ये बार बार रिपीट होता जाए, मतलब कि ये रुकना नहीं चाहिए. सो इसके लिए हम इसको बार बार रिपीट करवाने के लिए वी विल टेक द फॉर एवर ब्लॉक. ठीक है, फॉर एवर मतलब इसकी ये हम इसमें रिपीट ब्लॉक भी ले सकते हैं, बट रिपीट आप कितनी बार करवाओगे, इसलिए फॉर एवर ले लो, हमेशा ही रिपीट होता रहे. ठीक है, सो विल keep this conditions in the forever block. Understand? So now I will first of all see, I have now 2 events created. So when I'll click on this flag, first this event will work, then this will work, then next event will work. Okay, so step by step everything will work. So I'll click on the flag. Here you can see
when you click on the flag, you can see your whatever event block na, that will be shine. So yes, now I will control it with my keyboard, and when I, you can see when I touch to this maze surface, it will move back, bounce back. Okay, minus step 10 steps. So in this way our coding has done. Now again I'll click on the flag, so my ball came to the original position. Now what I want is that when the ball reaches to its destination, I mean touch to this ballerina, it says you won. Okay, so for that we'll do the coding. Yes, so for that what we are doing, we will do the coding in ballerina. Okay, means when ballerina touch to the ball, और else you can also do the coding, same event you can also create in the soccer ball. सॉकर में भी आप इवेंट थर्ड इवेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप बैलरीना में भी कर सकते हो, बात एक ही है. सो विल गो टू द बैलरीना, क्लिक ऑन बैलरीना एंड डू द कोडिंग that first of all create the event. Okay, now here also we want the condition. क्या कंडीशन है हमारी कि जब बैलरीना बॉल को टच करे तो वो बोले कि you won. Okay, so for that also we require the if condition. So go to the control block and take the same block again, if then वाला block ले लो. अब उसके अंदर हम लोग कंडीशन डालेंगे. विल डू द सेम. सो विल गो टू द सेंसिंग ब्लॉक and here we'll take the touching mouse pointer. यहाँ पे हम माउस पॉइंटर की जगह पे लेंगे बॉल सॉकर. ओके, व्हेन टचेस टू बॉल सॉकर देन व्हाट वी वांट टू सी, आई मीन हमें क्या करवाना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे, किस पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे लुक्स में जाएंगे एंड से हेलो फॉर 2 seconds. ओके, टेक दैट ब्लॉक एंड हेलो की जगह हम लोग लिख देंगे यू वन. ओके, यू वन, दैट्स ऑल. ओके, एंड अगेन डू द सेम. हमें ये हमेशा ही चाहिए, जब जब वो हो तो इसके लिए हम लोग फॉर एवर ब्लॉक ले लेंगे. विल टेक द फॉर एवर ब्लॉक हियर. ओके, दैट्स ऑल. सो नाउ विल क्लिक ऑन द फ्लैग. यहाँ पे हम लोग फ्लैग पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे धीरे धीरे. ओके, गो बाय दिस पाथ एंड अगेन गो अप. ओके, गो अप. if a small part will touch to the maze, then it will bounce back. Okay, yeah, and you won. So in this way you can create the game. Now so many interesting facts you can add here. So students, try it by yourself and also try for the various different games and show me the output.